हर वज़ीर आज़म ने ये कहा है, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है कि आफिया इज़ द डॉटर ऑफ द नेशन, वो कौम की बेटी है। तो जब वो आप कह रहे हैं कि बेटी है, तो फिर आपने बेटी के लिए क्या किया? आपकी अपनी बेटी होती तो क्या करेंगे? कभी खौफ आता है, दिल लरसता है कि शायद वो अपनी बेटियों को भी इसी तरह मिसट्रीट करते होंगे, शायद उन्हें उनकी भी परवाह नहीं होती, जो वो कैसे अपनी बेटी को बेकसूर बंद रहने दे सकते, कैसे अपनी बेटी के बच्चे उससे छिन जाने दे सकते और रात को सो जाते कि कोई हुकूमत ऐसी नहीं है, कोई सियासतदान ऐसा नहीं है जो पावर में आया हो और जो वजीर आजम बना हो और उसके पास थाली में रख के आफिया को लेने की पेशकश ना हो। आफिया सिद्दीकी का केस, आफिया मेरी छोटी बहन है, उसका केस बहुत सिंपल सा है। जितना कॉम्प्लिकेट सारे मीडिया ने मिलके और कुछ चंद डिट्रैक्टर्स और चंद वो लोग जो पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहते, जो इस पूरे वॉर ऑफ टेरर के उसमें एक टेरर मशीनरी जो है, ये उन लोगों का खुद साख्ता एक केस है और इस तरह के हजारों सैकड़ों केस हैं। सिर्फ ये है कि आप लोगों को उनके नाम नहीं पता। Well, she's not the only person who's targeted, of course. You know, I've represented dozens of people who were targeted in Guantanamo. Now, the reason that all of those folk are targeted is the color of your skin. And, you know, I'm American. I have to apologize for that because it's 100% wrong. But, you know, when you look at Guantanamo Bay, 100% of the people there are Muslim men. Aafia is only not in Guantanamo Bay, but she's a woman because they didn't want to look bad by taking her there. So instead they put her in a prison that in many ways is worse because she's the only Muslim woman there, right? And you think you have a hard time walking around outside with the prejudice of the people in the West sometimes who see you in your hijab or whatever. Imagine being in a prison that is that's 99% people who are different, and you're the only Muslim woman there. It's just so much worse. सिंपल सी स्टोरी है, एक सिंपल सी ये है, a case of rendition, a case of abduction, a case of superpowers and people who have power breaking every law in society. ये एग्जाम्पल है। आफिया वो पोस्टर चाइल्ड है, वो आइकॉन है उन तमाम लोगों का और उन तमाम टेररिस्ट एक्टिविटीज जो वॉर ऑफ टेरर के नाम पे की गई और उसके नाम पे जो कहने को दुनिया के मुहज़्ज़िब तरीन अपने आप को कहते हैं, उन्होंने अपनी हकीकत आफिया के केस को सामने रखते हुए बेनकाब कर दी कि हम कितना गिर सकते हैं। सिर्फ ये कि कहीं ये कंट्रीज जो थर्ड वर्ल्ड हैं ये फर्स्ट वर्ल्ड ना हो जाए। इतने सालों में पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारी आजमाइशें आई, इतनी वॉर्स भी हमने लड़ी बगैर किसी चीज़ के भी, लेकिन हम हर आजमाइश में तकलीफ़ें उठा के ये करके पेट पे पत्थर बांध के भी एक दूसरे का साथ देते हुए हम हमेशा अपनी इज्जत को हमने हमेशा बहाल रखा। हम इज्जत के साथ दुनिया में जाते थे और इज्जत थी। ये इज्जत हमारी जो है गिरनी शुरू हुई है जब हमारे पास एक डिक्टेटर साहब आए और उन्होंने अपने ही कौम के बेटे और बेटियों को, अपने गैर मास्टर्स को बेचना शुरू कर दिया चंद डॉलर्स के एवज। And I'm afraid you got to blame your former President Musharraf for this.
And you only have to read his book where he brags on page 234 of In the Line of Fire that more than half of the prisoners in Guantanamo were sold to the Americans for bounties. We have so far proven that of the 780 people in Guantanamo, 746 are innocent under the Americans' own agreement. They agree. They're the ones who say that. That's 96% of the people we had in Guantanamo Bay. And that's thanks to the bounty program, primarily here in Pakistan, but also in Afghanistan. तो Aafia for them was the trump card कि तुम्हारा टेस्ट है, तुम प्ले करते हो कि नहीं करते? Are you going to ask for your daughter? नहीं, तो तुम हमारी जूती की नोक पे हमारा डॉलर राइज होता रहेगा, तुम्हें कुछ नहीं वो होगा. That is the fact of the thing. And that is how America sees Aafia. It's not, America knows very well. ये नहीं है कि वो इतने बेवकूफ़ हैं कि उन्होंने जो चार्जेस लगाए कि वो सच्चे हैं, उन्हें पता है. उन्हें अच्छी तरह से पता है. I mean, जज ने फैसले में खुद लिखा हुआ है कि there is no evidence, लेकिन हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे ख्याल में इसकी जो आइडियोलॉजी है और जो वो है, वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस ले आएगी और वर्ल्ड चेंजर होगी. तो लेकिन वो समझते थे, लेकिन जिस मुल्क को वो ऊपर लेके जाना चाहती थी उसके अकाबिर क्या, वो जो एक हाउस नीग्रोस की कहानी आपने सुनी हो, जब एपार्थीड साउथ अफ्रीका के, उसमें इन लोगों का किरदार ऐसा ही है. But the prison she's in is a particularly nasty place. She's in an all-women's section, but there's all sorts of things go on in those places. She's in a cell with one other person who has been pretty hostile to her. She told me a story about how one night she wakes up in the middle of the night and this one assumes a lesbian woman is standing naked in front of her screaming at her. And it's just horribly traumatic. But the very worst part of it, I think, really is what she went through before, that she's notoriously the only woman who's gone through the American rendition to torture process. She was in Bagram Air Force Base along with all my other clients, where the torture was medieval. We were waterboarding people, we were hanging them up by the wrists, we were doing all sorts of things. And that was reserved primarily for men, with the exception of Aafia Siddiqui, and she went through all of that. हमारी हुकूमतें के पास बहुत सारे मौके आए, बहुत सारे. And the interesting thing जो है वो ये है कि कोई हुकूमत ऐसी नहीं है, कोई सियासतदान ऐसा नहीं है जो पावर में आया हो और जो वज़ीर आज़म बना हो और उसके पास थाली में रख के आफिया को लेने की पेशकश ना हो. Whether it's Imran Khan, whether it's Nawaz Sharif, whether it was ये जो हैं जिलानी साहब, whether it was वो राजा परवेज अशरफ, any one of these, each and every one of them were handed Aafia over. रेमंड डेविस के वाक़े पे, कर्नल जोसेफ के मौके पर, ब्रिगेडियर बॉगडाल के मौके पर, जब फौजियों को अनखला करनी थी उस मौके पर, every time. लेकिन उन्होंने अपने स्विस अकाउंट्स को भरना ज़्यादा मुनासिब समझा इससे कि ये करें. I'm not going to use the same brush to roll Pakistani politicians. I think most politicians are on our side. I've talked to many of them. I've done lots of human rights work with Imran Khan, for example, and I know he's on side. Shehbaz Sharif, I know he's on side. We're not talking party politics here. Every politician in Pakistan who's got half a brain is on our side because they know the Pakistani people are on our side, and therefore it's politically expedient, if nothing else, to do the right thing. So I've got no complaints about the politicians. That's not our issue. Our issue here, as it has been in one or two other cases, are a few people in what
you sometimes refer to as the deep state, but it's not the deep state, it's actually right at the very top of the state. And it's the people who, for better or for worse, undemocratically pull the strings of power in Pakistan. हर वज़ीर आज़म ने ये कहा है, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है कि आफिया इज़ द डॉटर ऑफ द नेशन, वो कौम की बेटी है। तो जब वो आप कह रहे हैं कि बेटी है, तो फिर आपने बेटी के लिए क्या किया? आपकी अपनी बेटी होती तो क्या करेंगे? कभी खौफ आता है, दिल लरसता है कि शायद वो अपनी बेटियों को भी इसी तरह मिसट्रीट करते होंगे, शायद उन्हें उनकी भी परवाह नहीं होती, जो वो कैसे अपनी बेटी को बेकसूर बंद रहने दे सकते, कैसे अपनी बेटी के बच्चे उससे छिन जाने दे सकते और रात को सो जाते। रहा और लोगों का, तो बहुत से सियासतदान ये कहते हैं कि हम तो चाहते थे करना, लेकिन पीछे से हमारे हाथ रोक दिए गए। आजकल आप बहुत सुन रहे हैं ये बात, और कहते हैं वो जो है वो brick wall है। I think there are people in this country who are afraid that when Aafia comes back here, they're going to look really bad because it's going to come out that they were mixed up in all the wrongdoing, right? And we know they were. I can tell you right now, we don't have to wait till Aafia comes back to say that there were people in the Pakistan hierarchy who were responsible for it. But we're not out to get them. We're not out to be vindictive about this. Aafia certainly isn't. She is so traumatized that I would prevent her from saying anything in public if she came back here, but she just couldn't do it physically and mentally. She needs to be with her family, not in front of a bunch of cameras. So no one coming back here is out to make the Pakistan hierarchy look bad. But if you don't let her back here, we are out to make you look bad. मेरा ईमान है कि अल्लाह ताला ने जब कुन कहना है फयाकुन हो जाना है। आफिया के बच्चे भी आए बहुत हर्डल्स के बाद, लेकिन जिस वक्त अबूर होना था, it just happened. ऐसे हुआ कि हम खुद हैरान थे कि कैसे होता है। तो ये तो हमारा ईमान है, वो तो एक ईमान की बात है कि इंशाल्लाह दुआ हमारी यही है कि अल्लाह जल्द से जल्द कर दे। हम कमज़ोर बंदे हैं, अल्लाह ताला जल्द कर दे, अब नहीं बर्दाश्त होता। लेकिन हकीकत जो है, जो वकला बताते हैं, अमेरिकन अटॉर्नी जनरल खुद यहाँ पे आए थे, उन्होंने बताया कि all Pakistan has to do is ask. Sit at the table and hold a dialogue. Ask. I mean, हाई कोर्ट ने भी ये कहा कि आप अमेरिकन एम्बेसडर को बुलाएं और उनसे पूछें कि भाई क्या करना है। ये तक नहीं कि हमारे फॉरेन ऑफिस ने इवन कोर्ट के कहने पे जो जज ने कहा कि आई फील लाइक आई एम बीटिंग अ डेड हॉर्स। ये एपथी का हाल है हमारे सिविल सर्वेंट्स का, हमारे ब्यूरोक्रेसी का, कि सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स का सिग्नेचर पेपर पे चाहिए था, वो तक नहीं हुआ। Sometimes you as Pakistanis think you're not the most powerful nation on earth. You're a lot more powerful than one little woman in a prison cell. So our job is to get everyone in Pakistan to get up in arms, not shooting people, but up with their arms and shouting to make sure the people in power in Pakistan help us bring her home. आखिरी बात हमारी बात 2016 में थी, दिसंबर के इमरान खान साहब की हुकूमत आने से पहले। उसके बाद बात बिल्कुल ख़त्म कर दी। और उससे पहले जो आफिया ने पैगाम और वो दिया था, तो उसने यही कहा था कि मुझे अल्लाह की ज़ात के बाद अपनी कौम पे भरोसा है कि वो मुझे नहीं भुलाएंगे और वो मुझे ज़रूर मौका देंगे कि मैं उनको उस तरक्की की, उस पे मेरा जो निज़ाम और वो है वो हो जाए और मैं वापस आऊँगी और वो कभी भी मेरे लिए कोशिश करने में थकेंगे नहीं। She felt totally forgotten and betrayed by Pakistan. So one thing I was able to do for her, and I've been trying to do this a lot since, is send her messages from people in Pakistan. So, everyone's welcome to my email address. It's nothing secret. It's clive@3dc.org.uk. You can put it up. You're welcome. Send me messages for Aafia and I'll try to get them into her. Because when I told her that I'd been in Pakistan many times and I didn't know a single person
who didn't think she was a legend in this country. You know, this had a big impact on her. That I think this was the first time she'd heard that Pakistani people care. And so we need to make sure that carries on for her own benefit.